अगर आपने ये वीडियो मिस करी तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिस करने वाले हो इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फ्रॉम द हार्ट में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें ड्राइंग तो नहीं है, लेकिन ड्राइंग से कम भी नहीं है, कुछ क्राफ्ट वर्क आपको दिखाने वाला हूँ। बेसिकली फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको प्लास्टिक का रीयूज़ करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो मिस करी तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिस करने वाले हो, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप शेयर करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन भी साथ में जरूर दबा दे, जिससे कि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आर्टिस्ट रवि तिवारी के नाम से, तो वहाँ पे भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। अब आते हैं वापस इस वीडियो में, मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ बेसिकली। तो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि बेसिकली हम लोग कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं या फिर पानी की बॉटल खरीदते हैं, पीने के बाद से फेंक देते हैं उसे। और आपको पता है प्लास्टिक से कितना ज़्यादा नुकसान होता है इन्वायरमेंट को हमारे, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि उसको रीयूज़ करते हैं हम लोग। तो इस वीडियो में मैंने किस तरीके से रीयूज़ किया है, आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखना। जैसे कि आप ये बॉटल देख रहे हैं, इस बॉटल से मैं रीयूज़ करके इसी बॉटल को और एक पॉट बनाने वाला हूँ, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉट मैंने बनाया हुआ है, और बिल्कुल भी आप बता नहीं सकते कि ये मैंने किस तरीके से बनाया हुआ, तो ये बिल्कुल सीक्रेट है। और ये वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। आपका 1 रुपया नहीं लगने वाला है इस पॉट को बनाने के लिए, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी और थोड़ा सा दिमाग चाहिए। तो ये तो मैंने बना ही दिया है, बस आपको बनाना है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बॉटल चाहिए होगा, और बॉटल को ऊपर से कट कर दें जिससे कि हमें पॉट बनाने में इजी रहेगा। और उसके बाद से जो मिट्टी है उसको आप पूरा कवर कर दें बढ़िया से, और जो भी आपको पॉट की शेप देनी है, किसी भी चीज़ की शेप देनी है, उस शेप के अकॉर्डिंग इसको पूरा लेयर वाइज लेयर कवर कर दें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको बढ़िया से धूप में अच्छे से सुखाएं, और सूखने के बाद से फ्रेंड्स क्या होगा कि इसमें क्रैक्स आ जाएंगे हल्के से, क्योंकि क्या है कि आपने अंदर से लेयर तो रखा नहीं, सिर्फ बाहर से लेयर किया है, तो इसकी वजह से वो एयर जो है उसमें पास होगा तो वो क्रैक आ जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर क्रैक्स में आ जाते हैं तो आपको दोबारा से एक मिट्टी की लेयर जहाँ पे क्रैक आए हैं उसको फिल करके और पानी से बढ़िया से उसको वापस उसमें जो मिट्टी है वो फिल कर दें। तो इस तरीके से ये पॉट पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद सूखने के बाद इसमें कभी भी क्रैक नहीं आएगा। फ्रेंड्स, जब ये सूख जाएगा तो आप इसमें वाइट पुट्टी जो होता है उसकी पूरी लेयर लगा देंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद से जब वो सूख जाए तो town to town, from London to Taiwan.
I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat this bittersweet heat. आपको एमडी पेपर लेके उसको घिस देना है जहाँ से शेप उसकी अच्छी आ जाए, और उसके बाद से आप उसमें कलर करके बेसिक चीज़ें आप इसमें देख। Set my heart afire, heart on fire. Set my heart afire. और फ्रेंड्स उसके बाद आप इसमें कलर कर दें, और कलर करने के बाद से सुखा दें, और सूखने के बाद से बिल्कुल रेडी है ये। Stop that thrill. My bones crave your skin. Temptation within. Mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat this bittersweet heat. Is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और हम बहुत ही जल्दी Q&A करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आपके जो भी सवाल हैं, कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग Q&A करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।